नमस्कार, राधे राधे सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। जैसे आपको प्रॉमिस किया गया था, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का जो अभी पेपर हुआ था उसका कंप्यूटर अवेयरनेस का कंप्लीट 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी तरह का जनरल अवेयरनेस का पेपर ऑलरेडी अपलोडेड, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। वहां 2-3 क्वेश्चन में हल्की फुल्की डिस्क्रिपेंसी है, इतना तो आप अलाउ कर ही सकते हैं। एग्जैक्ट पूरा पेपर किसी को भी याद नहीं होता, बट 99% पेपर वहां आपको सही मिलेगा। सेम ही इस पेपर के लिए मैं कहूंगा ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट पेपर यहाँ मिलेगा। इसका जो क्रेडिट है शुभम को जाता है, हमारे स्टूडेंट, उन्होंने पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन स्लाइड वगैरह सब तैयार करके आप लोगों के लिए मुझे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? ऑप्शंस आपके सामने है। 5th जनरेशन, 3rd, 1st, 4th या 2nd जनरेशन। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 3rd जनरेशन। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट वन देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट मेमोरी साइज अमंग द गिवन ऑप्शंस? ऑप्शंस आपके सामने। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ज़ीटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट इन ए कंप्यूटर्स हायरार्की? 5 ऑप्शंस आपको गिवन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रजिस्टर। डेजी व्हील इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? और 5 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। करेक्ट आंसर इज ई प्रिंटर। सॉल्यूशन आपके सामने है, आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीन मेमोरी? ऑप्शन 5 आपके सामने। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। Which protocol is primarily used to transfer files and web pages from a server to a web browser? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, HTTP। Which software is primarily required to access and navigate the World Wide Web? 5 ऑप्शंस आपके सामने। करेक्ट आंसर वेब ब्राउजर। What is the shortcut key to insert a hyperlink in MS Word document? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, Ctrl+K. Which of the following shortcut keys is not used for formatting text in MS Word? And the correct answer is Ctrl+S. The spelling check feature is located under which tab in MS Word? And the correct answer is option E, review. When a computer program stops responding, which utility is best used to terminate the unresponsive application? And the correct answer is option B, task manager. Which of the following is cloud storage? And correct answer is option D, OneDrive. Which software translator scans and converts the entire high-level source code into a machine language all at once before execution? And the correct answer is option C, compiler. Which type of malware self-replicates, spreads to other computer across networks without any human intervention? Correct answer is option D, worm. The practice of sending unsolicited bulk messages to a large number of users over the internet is called option D, spamming. Which of the following devices acts as both as input and as an output device? Correct answer option D, touch screen. Which device converts sound signal into digital input for a computer system? Option D, microphone. What is the valid range of digits used in an octal number system representation? And the correct answer is option D, 0 to 7. What is the maximum file attachment size allowed when sending a single email through Gmail? Correct answer is option B, 25 MB. The process of reducing a file's data size so that it consumes less storage space is called option D, compression. Which of the following options represent a high-level programming language? Correct answer is option C, Python. Which type of cyber attack involves masquerading or falsifying data to mimic a trusted source? Option D, spoofing. Which of the following is commonly classified as an antivirus software? Correct answer option C, Norton. Process of preparing a magnetic disk for first time use is called
ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग. Which authentication process automatically verifies a user's identity by scanning unique physical traits? Option D, biometrics. Which device is used to produce high quality graphics, drawings, blueprints and architectural maps? Correct answer is option B, plotter. Which application software is used for a workbook to organize, calculate and analyze the data? Correct answer option D, MS Excel. Which specialized devices scans printed / handwritten text from paper and converts it into editable digital format? Correct answer is option D, OCR scanner. Memory that stores data and instructions during execution? Option C, RAM. Data is stored in a computer in? Option B, binary form. Extension of a temporary file? Option C, .tmp. If user enters password and then system asks for OTP, this system is known as option E, two-factor authentication. Purpose of CAPTCHA is to? Option D, differentiate humans and bots. Which protocol is commonly used for sending emails? Option E, SMTP. The fraudulent practice of sending deceptive emails mimicking trusted sources to steal credentials is known as? Option D, phishing. Which hardware device converts digital signals into analog signals for telephone transmission and vice versa? Correct answer option E, modem. Which Windows utility provides a centralized interface to view, configure and modify system settings and hardware controls? Correct answer option E, control panel. Which of the following is not a system software? Correct answer option E, Notepad. What is the process of reducing the physical storage size of a data files to optimize disk space called? Option C, file compression. Which memory retains data permanently even when power is switched off? Option D, ROM. और इसी के साथ 40 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं. अगर आप वेटेज देखना चाहें तो वेटेज भी देख सकते हैं. अलग अलग टॉपिक्स के क्या क्या वेटेज हैं आपके स्क्रीन पर है, आप चेकआउट कर सकते हैं. मैं एक बार खुद को छुपा देता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आई होप सभी ने आज के सेशन को एंजॉय किया. आगे जितने भी ऐसे एग्जाम्स है जिसमें कंप्यूटर का एज अ सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आरआरबी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली. तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा. और क्या ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे कंफर्म भी कीजिएगा. कहीं पर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो बता दीजिएगा, नाराज मत होइएगा, बता दीजिएगा. जो डिस्क्रिपेंसी होगी या जो चेंजेस होंगे वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, जिससे आगे कोई देखे तो उसको पता हो कि क्या करेक्शंस है. ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलना नहीं. फीडबैक में बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा इस 40 क्वेश्चंस के. एज अ क्विज आपने, आई एम श्योर आपने अटेम्प्ट किया होगा. 40 में से आप कितने सही दे पाए. प्लस साथ ही साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अगेन थैंक्स टू शुभम जिन्होंने सारे क्वेश्चंस प्लस पीपीटी आप लोगों के लिए तैयार करके दी. राधे राधे, टेक केयर.